Hello people, I am Jaby Koay, joined by Achara, KIRK. Hello. We're looking at a CarryMinati video. This is called The Time We Transform. This is from CarryMinati's YouTube channel. Thanks so much, CarryMinati, for allowing us to react to this. Very, very much appreciate it. Y'all, if you haven't already, and I'm sure you have, subscribe to CarryMinati's YouTube channel. He's at almost 28 million subscribers. He needs a lot more. Yeah. The way this video is starting out, it looks like he's playing a video game and as he's doing his commentary over the game. I actually had a question for you guys. Do people still do this? Is this still a thing? This is a video from way back in 2017. Yeah. And I don't notice this that much anymore, because I used to see it a lot where people would just play a game, and like have a rant. as a pseudo let's play, while they were just talking. Yeah, have a rant. And I don't see it that often. I just was curious from you guys who watch a lot more of that kind of stuff than I do, is this still happening? It's just an interesting question I thought I'd throw for the comments. Anywho, here we go. तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाला हूँ जिससे हर कोई गुजरता है। फर्क नहीं पड़ता तो मेल फीमेल हो या अदर्स। ये एक ऐसा समय होता है जब समझ में नहीं आ रहा होता साला चल क्या रहा है। दिमाग कुछ और कह रहा है, दिल कुछ और चाह रहा है और शरीर का तो अलग ही प्लान है। तीनों के तीनों अलग ही दिशा में। मैं बात करने जा रहा हूँ प्यूबर्टी के बारे में। अब मैं तुम लोगों से पूछूंगा प्यूबर्टी क्या होती है, तो तुम में से ज्यादातर लोग बोलेंगे लेंगे बड़ा हो जाते हैं, टट्टे भूल जाते हैं। हाँ, बहुत सही। जैसा ही तुमने ये लिखा ना, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे ऊपर जितने पैसे लगाए थे ना, सबको इंसाफ मिल गया। लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो किताबों में नहीं लिखी, और अगर लिखी भी है तो उन्हें पढ़ कौन रहा है। तो इस शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। अब प्यूबर्टी से पहले बच्चों को फर्क नहीं पड़ता उनकी क्या हालत है। घुटने छिल रखे हैं, दांत टेढ़े मेढ़े हो रखे हैं, जबान पे मिट्टी लगी है और बालों का कबूतर हो रखा है। लेकिन प्यूबर्टी की शुरुआत से बच्चे होश में आ जाते हैं। जो लड़कियां पहले खींच खींच के मारम पिट्टी खेलती थी, अब उन्हें सजने धजने का शौक चढ़ चुका है। जो लड़कियां पहले बावड़ों की तरह इधर से उधर शादी में भगती फिरती थी, अब सीधे कैट वॉक की कोशिश हो रही है। जो लड़कियां पहले एक दूसरे की चोटी खींचती थी, अब एक दूसरे के साथ समाचार बांटती है, किसका किसके साथ चल रहा है, किसने कितना किसके लिए मेकअप लगाया। बस ये दो चीजों का पता चल जाए तो जिंदगी सफल। और फिर दुनिया की सबसे बुरी बीमारी, इंस्टाग्राम पे ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर डाल के ऐसी फोटो डालेंगी जैसे जिंदगी में जीने के लिए कुछ है ही नहीं। और कैप्शन का फोटो से तो छोड़ो, पूरे संसार से कोई मतलब नहीं है। आई वुड रादर पांडा इमोजी, समथिंग अबाउट हिम मेक्स मी बैड। और वो क्यों कौन है, किसकी बात हो रही है? वो बगल वाला प्रकाश जो अपने घर की पहली मंजिल से छलांग लगा लेता है। तुम सोचोगे इससे ज्यादा बर्बादी कैसे हो सकती है, लेकिन नहीं, अंग्रेजी का भूत ऐसे करता है जैसे कल इंग्लैंड की फ्लाइट है। तुमने देखा होगा ज्यादातर लड़कियां इंग्लिश में बात करती हैं। क्यों भैया, अपनी इमेज भी तो देखनी है। नहीं, तुम किससे आशिकी लड़ाओगे? वो लड़की जो कहती है hey, where are you going? या फिर अरे मुकेश कहाँ जा रहा है? अब चलते हैं हमारे घुमावटी पागल अकल के अंधे लौंडों पे। जो लौंडे पहले जानलेवा कबड्डी खेलते थे, अब भैया जिम का शौक चढ़ चुका है। पहले दिन ही जिम से आके अपने आप को शीशे में ऐसे देखेंगे जैसे कितना ही महान काम कर दिया हो, अपने पूरे खानदान का नाम रोशन कर दिया। और फिर ऐसे पोज मारेंगे जिन्हें देख के स्वयं आर्नोल्ड उड़ते हेलीकॉप्टर से छलांग लगा ले। ये है मेरी डोली और ये है मेरी मंडोली। अब To be able to rhythm, that's actually impressive. पोषण वाले एप्स की फोटो डालेंगे और नीचे सारे लॉन्डो के कमेंट्स। सही बोलिए भाई, मेरी भी बनवा दे। यार ये करना ना कसम से कानूनी जुर्म होना चाहिए। जब घर लौट के आते थे तो जगह जगह जख्म होते थे और शरीर में से कतई सुअर की हगास जैसी बदबू आ रही होती थी। लेकिन अब जिंदगी में डियो और परफ्यूम आ चुके हैं और उन्हें एक हफ्ते में खत्म करना धर्म बन चुका है। अब बालों में जेल लगाना शुरू कर दिया है। मैंने स्पाइस वाली बकचोदी तो देनी जरूरी है ना, लेकिन यार तुम अपने आप को कितना ही सजा लो धजा लो मोहन जुदारो, अगर तुम बुरी थूत के जानवर हो तो तुम बुरी थूत के जानवर हो। डील विद इट। अब तुम लोग सोच रहे होगे प्यूबर्टी और पैसे का क्या संबंध है। देखो, एक बच्चा जो प्यूबर्टी से गुजर रहा होता है उसके लिए उसकी इमेज से बढ़कर और कोई चीज नहीं है। जैसा रॉकस्टार में भाई साहब कहते हैं, इमेज इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज इमेज। उसे हर चीज से फर्क पड़ता है। वो जूते खरीदने कहाँ जा रहा है, नाइकी या बाटा? वो शॉपिंग करने कहाँ जा रहा है, मॉल में या सरोजनी नगर? वो डिनर करने कहाँ जा रहा है, रेस्टोरेंट्स में या पप्पू ढाबा? वो हर चीज को पैसे से तोलता है, उसे क्वालिटी से फर्क नहीं पड़ता।
पड़ता, बस महंगी होनी चाहिए। उसे तुम जादू का पीला रेनकोट भी पहना दोगे ना, ये कहकर कि 4,500 का है, खुशी खुशी पहन लेगा। अगर बच्चे का स्पोर्ट्स में शौक है तो सबसे महंगी चीज चाहिए। खेलना धोबी के बैट से भी ना आता हो, लेकिन बैट पे MRF लिखा होना चाहिए। अगर फुटबॉल का शौक है तो जूते वही पहनेगा जिन पे नाइकी की छाप है, उससे फर्क नहीं पड़ता जूते कैसे हैं, उसे बस वो 8,000 की छाप चाहिए। और फुटबॉल कौन सी चाहिए? जाबुलानी, जो स्वयं वर्ल्ड कप में इस्तेमाल हुई थी। जैसे बहन चौथ कली रोनाल्डो बन जाएगा। अब प्यूबर्टी के दौरान एक इंसान के अंदर एक बहुत ही बुरी और जरूरी चीज जन्म लेती है, जिसका नाम है घमंड, दिखावा, वैनिटी। पीस से लेके बाप की महंगी गाड़ी तक सब शो ऑफ करना है। सोचो एक 14 साल का बच्चा जिसका नाम है पद्दू पदोड़ा, उसका बाप लेके आया ऑडी देख उसकी गांड फटी। अब पद्दू पदोड़ा अपने 14 साल के जीवन में जितने जीव जंतु, इंसान, राक्षस, दानव को जानता है ना, ये बात वो उन सबको बताएगा। तुम उससे मिलोगे ना? और भाई कैसा है? कुछ नहीं यार, बस ऑडी ले ली। ओह कांग्रेट्स यार। अच्छा सुन, दोपहर को खेलेगा? नहीं यार, दोपहर को सैलून जाऊंगा ऑडी में। फिर शाम को? नहीं यार, शाम को जिम जाऊंगा ऑडी में। अच्छा ट्यूशन तो आएगा ना? नहीं यार, कुतुब मीनार देखने जाऊंगा ऑडी। नहीं, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। तेरे बाप ने गाड़ी खरीदी है, तेरे बाप ने पैसे दिए, तेरा बाप उसे चलाएगा। तूने घंटा कुछ नहीं उखाड़ा, लेकिन तब भी टिंडोरा पीटता फिर रहा है। ऑडी ले ली मैंने, ऑडी ले ली मैंने, ऑडी ले ली मैंने। हाँ चल ठीक है यार, तेरे बाप ने गाड़ी खरीदी है, एक तरह से हक बनता है तेरा। लेकिन इतना क्या हो गया, गाड़ी ही खरीदी है, पहचो देश थोड़ी ना खरीद लिया। एटीट्यूड एक 13 से 14 साल के बच्चे में पाया जाता है ना, उतना 270 साल के बुढ़ों में भी नहीं मिलेगा। हर बच्चा अपनी उम्र के बच्चे को देख के सोचता है ये तो चूतिया। इस नजरिए से देखे तो सारे बच्चे चूतिए होते हैं, और ये बात उन्होंने खुद साबित की है। ये लोग अपनी ही दुनिया में जीते हैं, जहाँ ये सबसे ऊपर है और सब इनके नीचे आते हैं। चाहे ये सोचते हुए अपने नाक के चूहों से क्यों ना खेल रहे हो। ये लोग इतने अजीब होते हैं ना, तुम इनकी स्कूटी ठोक दोगे ना, कुछ नहीं कहेंगे ना, लेकिन इनके पिज्जा का एक पीस खा लो तो पूरी आत्मा काट जाती है इनकी। और फिर अगले दिन तुम फिर से इनके पिज्जा का पीस खाओ तो कुछ नहीं कहेंगे ना, लेकिन अगर इनकी स्कूटी ठोक दो तो झट सरिया निकाल लेंगे। अरे जिंदगी से चाहते क्या हो, क्या करके मानोगे? अब ये चीज मेरे ख्याल से सबके साथ क्लास में होती है। इधर उधर मुंडी घूम रही होगी और फिर नजर जाती है अपनी क्रश प्रेमासक्त पर, और बस खो गए अपनी दुनिया में। आशिकी से लेके जिस्म 2 तक सब खेल मारा। फिर एकदम से आवाज आती है, पद्दू पदोड़ा खड़ो और इस सवाल का जवाब दो। सर बैठे बैठे दे दूं? नहीं, खड़े हो और इस सवाल का जवाब दो। नहीं सर, खड़ा नहीं हो सकता, बैठे बैठे दे दूंगा। पद्दू पदोड़ा स्टैंड अप। अरे तुझे आंसर पता है तो तू खड़ा क्यों नहीं हो जाता? लंडे खड़ा है यार। Oh no. तुम क्यों हंस रहे हो? खड़े हो और इस सवाल का जवाब दो। सर मैं भी बैठे बैठे। तुझे भी तो आंसर पता है, तू क्यों नहीं खड़ा हो जाता? यार मेरा भी। Oh no. बच्चों सर्वे के मुताबिक इस हादसे का शिकार रोज 1 से 2 लाख बच्चे हुए। दुनिया समझती है लड़कियां ज्यादा स्मार्ट हैं, झट खड़े होकर सवाल का जवाब दे देती है। ऐसा नहीं है हमें जवाब नहीं आता, बस हम खड़े नहीं हो सकते। Conclusion. अब तुम लोग बोलोगे तेरी बाबा इतना ज्ञान दिया है तो कुछ इलाज भी बताओ। देखो यार, ये कुछ बीमारी नहीं है जिसका इलाज ढूंढा जाए, सबके साथ होती है, इट्स नेचुरल, प्रकृति में है बहन चो। तो यार इतना सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है, मजे लो, एंजॉय करो, बकचोदी पे लो। अब अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो और मुझे बताओ अगर तुम लोगों को ऐसी वीडियोस और देखनी है। अब अगर तुम लोग ये बकचोदी पहली बार देख रहे हो और तुम्हें मजे आए तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसे हिलाओ, झुलाओ या दूध पिलाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे प्रकाश को पहली मंजिल से छलांग लगाते हुए देखना है। बाय। कितनी बार कहा है यार, सही से मूत लिया कर, ये ठाकुर स्टाइल में मूत आदत लगी हुई है तुझे।
The very thing that I mentioned about him doing this video with the video game Let's Play, I actually found distracting. Like I like it better when it's just him talking to camera. Yeah. Even if he wasn't doing all the, CarryMinati really goes to great lengths to keep you from being bored while watching his video. Yeah, he does a good job of that. Because he has the camera. I mean, I personally don't even need that. Like, I think he's just an interesting, charismatic guy enough on his own that he doesn't need to do that, and I'll still enjoy it. And it's cool for the people who need that to just stay, to keep their attention. But this certainly was like, what is that? Do you hear that? Yeah. I think it was a car going by. Someone with a very huge penis. Sometimes you get people with like these mufflers, they drill holes into their mufflers so their car is really loud, or they put this like extra heavy bass, this loud bass, so that everyone in the neighborhood has to be bothered by them. Yeah. It's like, you don't get the benefit of that. Why do you, like, you can't experience their experience. Why do you do this? All I was trying to say was, I like his current videos better in terms of the format, in terms of the way he conducts it. Like, I like seeing him with his gesticulation and his expression so much better than seeing a Let's Play of some kind. That being said, his commentary was interesting. Yeah. I'm so far removed from these experiences, even though you hear that, right? Even though I'm so far removed, this is so distracting. I wish the guy would stop. I'm so far removed from those experiences that I'm having to like really reach into my memory bank and be like, what was that like? What was that experience like? I was just wondering about the whole like not being able to stand up because of a situation. I have heard about that happening. Is that real? That is a thing. The thing that was really tickling me in that moment was that he was actually doing a pretty good Amitabh Bachchan. Which is ironic. Yeah, which is ironic because he's now cast in a movie. To work with him, yeah. To work with him. So that just kind of made me giggle because it's kind of like this full circle moment for him. I did think about that while watching, and I'm like, this is so bizarre. Like, what a weird, trippy world that he must be living in to like be making him part of a joke, and then to be working with him in a movie. Yeah. But I suppose like anyone who's sort of works in the industry sort of has some sort of experience like that. Like, I had the biggest crush on Jennifer Aniston as a kid in Friends, and then I was in a commercial with her. Yeah. Like, you just, you have strange experiences like that. No, it's wild. There was this Playboy model that I used to really like a lot as a kid. Her name is Sung-hee Lee, or Sung-hi Lee. She's Korean. SUNG space HI space LEE, I believe is how you spell her name. And I had a full-blown conversation with her at a casting studio I was working at because she was auditioning. And it's like, I could not get over the fact that I was talking to someone who I used to have wet dreams about. Ooh. Isn't that weird? Yeah. Like, and it just like, it tripped me out. I'm like, I'm talking to you as a person right now, like as a grown-up. And I used to like have this like, you're on a pedestal kind of thing. Yeah. It's just bizarre. I've seen you without your clothes on. And I've had the opportunity to work with some people that I like idolized and revered. And so, anywho. It's interesting, to say the least. Yeah. That's not what this video was about at all, but I did think about that as well while watching it. I thought his voices were funny. The situation where the kid didn't want to stand up. Oh yeah. Because he was like, hey, it's... No, it was some really great editing there as well. Like, to just use like really weird, funny, awkward pictures and just kind of use the keyframes to move them around, zooming in, zooming out. Like, it worked really well. Look at Achara's references, keyframes. Keyframes. She knows a thing or two. The idea that, you're looking in the mirror and, you making those poses. The way he phrased it was that, at least according to the subtitles, was that, boys do these poses that would make Arnold Schwarzenegger want to jump out of a helicopter. Because Arnold Schwarzenegger was famously a bodybuilder. I read about that. I remember, that's the thing I'm recalling from my childhood while going through puberty, is reading the sex ed books in Catholic school. And this notion of, a little skinny kid looking in the mirror, what he sees back is a buff guy. I'm like, I didn't ever have that experience as a kid. When I looked in the mirror, I always saw, and still do, I don't see what other people see of me. Kristen Stephenson Pino, I remember she was making fun of me because she's like, saying I'm buff. And I go, what? Like, at that time, I either saw a fat boy or a skinny boy. I didn't see a buff guy. So it's just interesting how people perceive you. I always have this weird either imposter syndrome or body dysmorphia. Yeah. Or a combination of the two. Anyway, he was making fun of the kid who was like flexing his biceps at the same time. The rhythm of like, because like I can make my pecs move, right? I used to be able to do that. Not anymore. It's sad that is a used to. I don't know. I was, when I was like active in gymnastics and stuff, I was able to do that more. Why tell me things that I can't enjoy? So. What? You want to see me make my pecs dance?
I think everybody wants to see that, and I think that has stolen the show now. I think that's all the comments will be going forward. It is interesting, that transition of, you know, coming into your own as a kid, and when you reach that coming of age situation in your life where mentally your priorities are shifting. The thing that I found remarkable was when he was talking about the kid who thinks that he owns a car because his dad bought the car. Oh yeah. And I feel that happens all the time though. Well, it does, because you're at that age where you want a sense of ownership. Like I'm playing God of War right now, right? And they really highlight that in a very, very strong way, where the kid is coming into his own. I haven't beat the game yet, but the kid is coming into his own and he wants to be, you know, stronger. Usually every time you see a show or a movie about royalty, you see the same thing where, you know, that young prince wants power. Yeah. And it's because they want something to call their own. That's what that's about. It all comes from the same place of, it's a very tribal thing where you see what your father is able to do, what he's accomplishing, how the other villagers maybe look up to him, the other people in the tribe look up to your father. You want a piece of that for whatever reason, like something inside your DNA says, I want to be able to claim that for myself. As a kid who is not that far removed from the evolution of, you know, we're not that far from that, if you think about it. For like the last a million years is a very short time span in the grand scheme of things. So we're not that far removed from that way of thinking. Because there's no place for us to really put that, we just start making shit up. Car's mine, because we don't really have a thing to call our own as 13-year-old males in this day and age. No, there isn't. And like, I just find that so frustrating sometimes when I see kids do that, because I'll be like, excuse me, did you work a 60-hour week? And did you earn the money to buy that nice car? No, shut up. Right. Yeah. Anyway, yeah, I enjoyed this. I like how he's evolved his style a lot, because he's dialed back that ADD thing a little bit, enough to like allow someone like me to keep up with it. And I think he's gotten more confidence in just himself as a speaker, as someone who's, you know, communicating to be in front of the camera, ideas, and being in front of the camera. When I think he's just got his confidence has just grown significantly over the years, to the point that he doesn't have to edit at that lightning speed anymore. I think we've also evolved as audiences we're more comfortable with longer form content on YouTube. That being said, most people haven't stuck around to this point in the video. Oh, wow. If you have, then I guess in the comments say, I'll contact him for you. Yes. That phrase. We'll know you stayed. Yeah, exactly. You guys, thanks so much. I'm Jaby Koay. This is Achara KIRK. Peace out.